नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम भारत का बजट। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को संसद में केंद्रीय बजट पेश किया। बजट का संदेश है उसके अनुसार राष्ट्र पहले, किसानों की आय दुगनी करने, स्वस्थ भारत, सुशासन, युवाओं के लिए अवसर, सभी के लिए शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, समावेशी विकास के जरिए अमृत महोत्सव का जो दौर भारत में चल रहा है उसके तहत आत्मनिर्भर भारत की तस्वीर इस बजट का संदेश है। हम अगले 1 घंटे बात करेंगे बजट के विभिन्न पहलुओं पर और आपको बताएंगे कि इस बजट में क्या कुछ खास है। Well, thank you, Manoj ji, and I'm Vishal Dahiya. Obviously, we're going to talk about all the key highlights of the union budget this year, and as my colleague has listed out various aspects of the union budget, let's now try and understand in detail, sector-wise, as well as the key aspects which the budget has focused upon. And for more on this, we're joined by a distinguished panel of experts. Let me first introduce them to you. We have with us Mr. A.K. Bhattacharya, Editorial Director, Business Standard. We're also joined by Mr. Sachin Chaturvedi, DG RIS. I'll begin with you, Mr. Bhattacharya. It looks like, the 3 key words are investment, infrastructure, and digital. Now, let's begin with the investment part first. And the key question here, it looks like the government has done its bit in terms of investment. Time for private sector to pitch in, and also what, according to you, are the incentives which the government is providing for the private sector to do so? Well, I think I will add another word to your lexicon of describing the budget. I think it is certainly focused on investment, but a focus on investment that is not getting diluted by the government's need to borrow more. So it's the message is loud and clear for everyone that the government is not wary of borrowing more for investing more in capital expenditure. This is to borrow more, to spend more on capex. I mean, in recent times, one has not seen the kind of squeeze that the revenue expenditure has received this year. The increase in revenue expenditure is less than 1%, whereas the increase in capex is around 35%. If you exclude the one-off the infusion of capital into Air India, which was sold to the Tatas. So essentially, what you're seeing in this budget is a vision that the government is not at all averse to borrowing more, to spend more, to create more capital assets, which can sustain growth in the days to come. Okay. So that seems to be the overall guiding philosophy, as I see in this budget. Along with that, you have got various, associated ideas of the budget, whether it is green bonds, whether it is going in for increased allocations for Har Ghar Mein Jal. All those things are part and parcel, but the broad message that I get is that government wants to crowd in private investment because the private sector is not investing. Its capacity utilization level is less than 70%. So where do you get the investment to come in? And that investment is going to come in from the government side, even though it means borrowing at a level that creates its own sustainability issue with almost a fourth of government's total expenditure will get usurped by interest payments. Okay. But that's a risk that the government has consciously taken. Okay, and that is something which was the call of the day as well, looking at bringing in more investments there. Mr. Sachin Chaturvedi, the other eye of the budget is infrastructure, and there is a lot to talk about, a lot of areas which have been put in focus by the government, be it the expansion of national highways, the PM Gati Shakti national master plan for that, the railways, then you look at river linking projects as well, developmental projects in northeastern states, and the social sectors also, quite a lot of focus there. That's right, Vishalji. And I think to your list of lexicon, which AKB mentioned
added borrowing to your idea of investment in infrastructure. And I think we should not forget two more, the idea of growth and jobs. So if you see, they are natural outcome of the whole process, but you also see them as dividends in terms of refinancing the larger requirements that are there without compromising the social infrastructure programs that are already on. So the convergence that we are seeing is also in terms of social and physical infrastructure. And this is something which is a very conscientious decision that in last 2 years has consistently paved way in terms of how capital expenditure is being done. The idea of health infrastructure, the idea of Saksham Anganwadis which would come up, or even supporting solar panels in the farms, agriculture farms, huge programs have been rolled out. So I think you find a mixed sort of trend which is giving messages across the nature of capital expenditure that we are incurring. In fact, Asian Infrastructure Investment Bank had rated some of our projects in terms of the social gains as one of the highest ones. So if you find those projects bringing in new changes, you find the whole eastern corridor that is coming up from Kolkata to Kanyakumari, and the idea that was there to connect it further down in Africa. You find a huge connect between this infrastructure and the nature of industries that are coming in. So you see infrastructure, you see efforts and expenditures, but you also see efforts for job creation and also for growth in those local areas. Okay. So I think a huge spectrum of issues which have come up. जी सचिन जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो 5 क्षेत्र ऐसे हैं जिस पे खास तौर पे फोकस किया जा रहा है। 48,000 करोड़ रुपए पीएम हाउसिंग स्कीम के लिए दिए गए हैं, आवंटित किए गए हैं, जो सबको घर मिल सके, खास तौर से मिडिल क्लास या आर्थिक रूप से और जो कमजोर लोग हैं उनको घर मिल सके, साथ ही हर घर में पानी पहुंचे। नल से जल योजना जो सरकार की है, हाईवे एक्सपेंशन की बात है, इसको आप कैसे देखते हैं? और रिवर लिंकिंग की जो बात है, खासतौर से केन बेतवा की जो बात की गई है, उसके क्या मायने हैं? अगर मैं आपका लास्ट पॉइंट ही लूं, केन बेतवा की जो आपने बात करी, बुंदेलखंड एक ऐसा बड़ा क्षेत्र है जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में है। 4 डिस्ट्रिक्ट्स दोनों तरफ से हैं, 8 डिस्ट्रिक्ट्स का जोन है। वर्षों से उनकी लंबित योजनाएं हैं और विकास के कई चुनौतियों से वो लोग जूझ रहे हैं। पानी की कमी है, कृषि का उत्पादन कम है, कई तरह की चुनौतियां हैं। आज इस घोषणा से न सिर्फ उस क्षेत्र के लोगों का भला होगा, बल्कि जो पॉइंट मैं कह रहा था आपसे, और आपने अच्छा हुआ इसका जिक्र किया, हाउसिंग और अर्बन प्लानिंग का, ये वही पॉइंट है जिसके बारे में मैं AIIB की रिपोर्ट के बारे में भी जिक्र कर रहा था कि हम फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर से जोड़ने में सफल रहे हैं। और ये हमारा कई साउथ ईस्ट एशियन देशों के मुकाबले एक फर्क स्ट्रेटेजी इंफ्रास्ट्रक्चर को फाइनेंस करने की रही है, जिसमें हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर भी इंप्रूव हो रहा है, जिसमें हमारा सोशल इकोसिस्टम भी एड्रेस हो रहा है, और ये कई तरह के प्रोजेक्ट्स में आ रहा है। तो अब आप अगर देखेंगे जहां नए कॉरिडोर्स बन रहे हैं, वहां सप्लीमेंटिंग एफर्ट्स क्या है, उसमें सप्लीमेंटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंडिचर क्या है, तो आप देखेंगे कि वहां उद्योग लगाने की बात, वहां ग्रामीण सड़कों की, जैसे आपने देखा कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में 27% इजाफा किया। जी, ये जो ग्रामीण इलाकों को जोड़ने की बात है, कृषि के क्षेत्र में उत्पादन की और उत्पादन को बाजार में लेके आने की, तो मुझे लगता है कि एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू हमें लेना पड़ेगा, उसका सेग्रीगेटेड व्यू नहीं हो सकता। जी, AK भट्टाचार्य जी, अगर मैं बात करूं कृषि क्षेत्र की, तो कृषि क्षेत्र के लिए इस बार खासा फोकस सरकार ने पहले की तरह ही रखा है। ग्रामीण क्षेत्र का विकास और कृषि को बढ़ावा, किसानों का कल्याण, ये ऐसा एक फोकस रहा है जो पहले भी बजट में देखने को मिलता रहा है और इस बार भी खास तौर से देखने को मिला है। चाहे किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य देने की बात हो या दूसरी कल्याणकारी योजना की बात हो, आयल सीड का आयात घटाने की दिशा में काम करते हुए घरेलू प्रोडक्शन को बढ़ावा देने की बात हो, आप कैसे देखते हैं? जो कृषि के क्षेत्र में जो स्कीम्स के ऐलान किए गए हैं, मैं समझता हूं कि
वो जो समर्थन मूल्य की जो एक कमिटमेंट दिया गया है, वो मैं समझता हूँ कि उससे काफी जो कृषकों के अंदर जो एक आशा थी या एक्सपेक्टेशन था, उसको एड्रेस करेगा। कृषि में जो एलोकेशंस जो हैं, एलोकेशंस में मैंने बजटरी एलोकेशंस में ज्यादा मैंने हेर फेर नहीं देखी। जी। पर ओवरऑल जो इरिगेशन जो स्कीम जो है, उसमें मैं समझता हूँ कि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं, उसमें काफी जोर दिया गया है। और मैं समझता हूँ कि जो ग्रामीण लोगों को जो एक बैंकिंग व्यवस्था की जो सुविधा उपलब्ध कराने जा रही है, वो मैं समझता हूँ कि ईज ऑफ लिविंग, जैसे कि अगर 1.5 लाख करीबन पोस्ट ऑफिस को अगर कोर बैंकिंग सोल्यूशन के साथ जोड़ दिया जाए, तो मैं समझता हूँ कि जो कृषक लोग जो हैं, वो अगर भारत की जो पूरी जो नेशनल बैंकिंग व्यवस्था के साथ जुड़ जाएंगे, तो ये एक बहुत बड़ा एक उनके लिए अपने लाइवलीहुड के लिए एक बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूशन रहेगा। Okay. ऑन द अदर हैंड, क्या एग्रीकल्चर में जो हमारी जो प्रधानमंत्री किसान योजना को और भी, मैं समझता हूं कि जो कृषि सम्मान जो है निधि, उसको और भी जो किस तरह से इम्प्लीमेंट करना चाहिए, मैं समझता हूं वो बहुत जरूरी है। जो नरेगा का जो एब्जॉर्प्टिव सिस्टम जो है नरेगा का, वो भी एक मैं समझता हूँ कि कोई जो डिस्ट्रेस जो रूरल सेक्टर में जो आया था, उसको करने के लिए एलोकेशन किए गए हैं। पर लगता है कि जो डिमांड जो है थोड़ी बहुत नीचे जा रही है, इसीलिए अगले साल के जो एलोकेशंस में थोड़ी बहुत कमी दिख रही है। पर ऑन द होल एग्रीकल्चर में जो जोर दिया गया है, इसमें कुछ कोई असंतुष्ट होने वाली बात नहीं है। Okay, okay. Mr. Chaturvedi, I'd like to bring you in here and on an aspect which is really important now because it runs like a theme through all these schemes, almost all the schemes and policies of this government, that is the digital front. And this budget puts a lot of focus back on the use of digital technology or the digital medium also. When we look at banking, the budget says somewhere around 75 digital banking units in 75 districts, and there is a plan to introduce digital rupee as well. When you come to education, there is talk of digital universities and putting in place television channels as well. Even for agriculture, Mr. Bhattacharya was referring to, there is a lot of focus on using digital technology. Absolutely right. And don't forget about the gift city, connecting fintech and fintech related more university courses from outside to be recognized in the gift city, opening up institutions for teaching mathematics and science technology innovation. So there's a huge emphasis on how IT and IT-based solutions are going to integrate our economy, bring in more accountability, reduce leakages, and enhance access. And the whole idea of 5G is precisely in terms of way back in 2002, President Kalam had talked about Pura providing urban amenities in rural areas. Now, Finance Minister has reminded us of that by saying that in the rural areas this would be done. And the modality has now also been amended. The BharatNet was given to a public sector company. Now she today talked about the PPP mode to achieve the timeline of 2025. Okay. So this would bring in a mega change in terms of how we look at some of these positionings, because the way Indian economy is getting integrated at the global level, be that in terms of governance of crypto or digital currency, the digital payment architecture, the fintech that is required, you find greater convergence. Even the post offices that she talked about would have the nature of ATMs that are required, Okay. the micro ATMs and other technological solutions. Okay, Mr. Bhattacharya, I remember our discussion last night on the economic survey, and two sectors which you spoke about, which we discussed was, and this economic survey also mentioned that is focus on manufacturing and MSMEs. That seem to have been realized in the budget today. When we look at
the focus areas. Apart from infrastructure, obviously, there is a lot of push there. But there is, a lot more breathing room or elbow room being given to manufacturing and MSMEs as well in terms of PLI scheme, in terms of additional credit line as well. Well, yeah, I think the MSME sector has been the woes of MSME sector have been addressed to a great extent by extension of the emergency credit line guarantee scheme for yet one more year. So hopefully the MSME sector, which came under the adverse impact of COVID and demand destruction of sorts, that the MSME sector will hopefully recover by getting continued assistance under the scheme. But the equally important announcement in the budget is with regard to the manner in which the PLI scheme has been conceived and is being projected as a scheme, almost like a scheme that is dear to the government's national economic security project. PLI has to be seen the way it is being guided and being covering the sectors, and mind you, manufacturing sector is part of that, is to identify areas which are part of India's national economic security mission, whether it is a question of electrical vehicles, or whether it is a manufacturing of fuel cells. The budget announces that a new sector has been identified, and around, I think, 36,000 crore has been allocated for providing PLI incentives for manufacture of these fuel PV modules. So therefore, to kickstart the PLI scheme and ensure that the benefits of PLI scheme actually arise through these national economic security missions, in my view, is something that this budget should be remembered for. Along with that is a focus on the 5G. I think there's been a clear emphasis by the finance minister on how a 5G will have to be promoted and be rolled out before the end of next financial year. And if you look at the budget numbers, there has been no greed, the past government's greed, in terms of raising spectrum revenues. If you look at the telecom services, indeed, that is very a significant point out there, Mr. Bhattacharya. I request you to hold your thoughts there, and the 5G part will obviously give a push to that digital theme which we were earlier talking about. We're also now joined by Mr. Rajiv Kumar, Vice Chairman of Niti Aayog. He's with us. Mr. Kumar, we were talking about the way the budget has put in focus several aspects. And infrastructure being one of them, investment another, digital, fold or digital technology there. Agriculture, of course, remains the key focus areas. So are MSMEs and, manufacturing sector as well. How would you summarize this year's budget and the concept it puts forth to the nation? In my view, this is a beginning of the building of new India, which is an India which is going to be a modern, digitally empowered, world-class infrastructure, a globally comparable education sector, and an India which will see that we will empower our youth with not just the education sector, but also providing them with seamless logistics, integrated logistics, as the Gati Shakti Master Plan puts out. And this budget lays the foundation for building that India today, with its focus on infrastructure, with its focus on logistics, on employment generation, on sunrise sectors, which are the 14 PLI sectors, plus also the other sectors that the finance minister mentioned, like artificial intelligence and digital technology, etc., and agro-tech and education, digital education, and so on. So I think this is a path-breaking budget.
which we will refer to Okay. in times to come as the beginning of the building of New India. Okay, you mentioned the term agrotech. I'd like to expand it further and seek your views there. When we're looking at agriculture sector in the budget, there's a lot of talk about tech there as well, use of Kisan drones, and I remember a previous conversation I had with you where we were talking about chemical-free natural farming as well. That has been mentioned in the budget. Seems like time to move ahead on these aspects to ensure that we reap the benefits from a sector which has always stood as a bedrock of our economy. Absolutely. And I think agricultural transformation is going to be the key for the economy going forward. Agricultural modernization, a change in whole agriculture paradigm to be led by agroecology, of which natural farming is an integral part. If we get going on natural farming as the budget promises, that on the 5-kilometer wide corridor along the Ganges, but also in the rest of the country, because now it's already being practiced in the 11 states. We will not only achieve lower water consumption, we will improve our carbon content in the soil, prevent it from becoming more arid and towards desertification. We'll have much lower costs, 1/10 of the current costs which the farmers spend on buying chemical inputs, and we will have much better products for our consumers, which will improve their health as well as that of the farmer. The most important point here, of course, would be that we'll be able to have a large-scale carbon sequestration as the carbon in the atmosphere is brought into the soil, the carbon content in the soil increases. So I think this, combined with the investments in food processing, in agrotech, and in all the facilities that the finance minister mentioned, will ensure that we get not only a modernized agriculture, but a radically transformed agricultural sector in going forward in our country. जी राजीव जी, मैं मनोज वर्मा हूं और मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को लेकर भी खासा जोर इस बजट में देखने को मिल रहा है। खास तौर से एग्रीकल्चर से जुड़े स्टार्टअप की बात की गई है, रूरल एंटरप्राइजेस की बात इसको की गई और साथ ही सरकार ने कहा हम फाइनेंस करेंगे। तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था पे जो सरकार का जोर इसमें देखने को मिल रहा है बजट में हमको, खास तौर से टेक्नोलॉजी के जरिए हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था और हमारा किसान कैसे आर्थिक रूप से संपन्न हो, मजबूत हो, इसकी झलक भी देखने को मिल रही है। आप कैसे देखते हैं इसको? नहीं, आप जो बात कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि जैसा कि अभी पहले भी बात हो रही थी, ग्रामीण क्षेत्र हमारी अर्थव्यवस्था का एक बहुत मुख्य और बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है, और इसमें आज आवश्यकता है कि इसमें जो पूरा डेवलपमेंट मॉडल जो सन 1960 से चला आ रहा है उसको बदलने की, उसको फिर से एक नए सिरे से सोचने की। इसमें जो एग्रो प्रोसेसिंग है, तो आज शायद 10% जो है वो सिर्फ हमारा जो उत्पादन है कृषि क्षेत्र का, वो उसमें एग्रो प्रोसेसिंग होता है। इसको बढ़ाने की बहुत आवश्यकता है, इसका हमें निर्यात करने की आवश्यकता है। हमें इसमें जो है वो जो अपने जो हमारी इनपुट्स लगती हैं उनकी हमें लागत कम करने की आवश्यकता है, और उनको हमें जो है वो चाहे वो सेंसर्स हों या वो किसान ड्रोन्स हों या वो डिजिटल लैंड होल्डिंग्स रिकॉर्ड हों, उन सब को मिला के हमें अपने एग्रीकल्चर की पूरी शक्ल ही बदल देनी है। क्योंकि अगर हम नहीं इसको बदल पाएंगे तो हमारे ख्याल में ये एक बहुत बड़ा, जिसमें करीब हमारे 12 करोड़ घर हैं किसानों के, जिसमें जो जुड़े हुए हैं, उनको जो हम फायदे पहुंचना है वो नहीं पहुंच पाएंगे। मेरे ख्याल में इसी तरह से जो अभी बात चल रही है कि पूरे ग्रामीण क्षेत्र में हम हर घर में नल, हर घर में जल पहुंचा सकेंगे। हमने उसके पहले जो था वो स्वच्छता अभियान चलाया, उससे भी हमारी ग्रामीण क्षेत्र की जो है वो शक्ल बदली है। मेरे ख्याल में सब ले देकर ये कहना उचित ही होगा कि आने वाले सालों में हमारा ग्रामीण क्षेत्र, जो आज हमें द्वंद्व दिखता है अर्बन और रूरल में, ग्रामीण और शहरों में, वो धीरे धीरे खत्म होगा। और जब तक वो खत्म नहीं होगा तब तक हम इस बात को नहीं कह पाएंगे कि हमारा देश वाकई सबका विकास और सबके विश्वास के साथ चल रहा है। और यही हमें, जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा, यही हमें अपनाना है और यही हमें करके दिखाना है। राजीव जी, पिछले कुछ अरसे से हमने देखा कि सरकार का यह प्रयास रहा है कि सीधा लाभ किसानों को मिले, उनके खाते में सीधा बेनिफिट उनको मिले।
इसमें भी हम देख रहे हैं किसानों के खाते में 2.37 लाख करोड़ रुपए की एमएसपी सीधे ट्रांसफर करने की बात कही गई है। साथ ही इसके अलावा और भी तमाम ऐसी बातें कही गई हैं, जैसे गेहूं और धान की खरीद के लिए 1.63 करोड़ किसानों को 2.37 लाख करोड़ रुपए का सीधा भुगतान। ये सीधे भुगतान से किसान कितना संपन्न हो रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि एक तरफ कर्ज माफी की बात बहुत होती है। नहीं, देखिए, कर्ज वापसी की बात तो इस सरकार ने कभी करी नहीं जी और इस सरकार का हमेशा लक्ष्य यही रहा है कि किसानों की आमदनी बढ़े जी और किसानों को जो न्यूनतम मूल्य है उस पर उनका प्रोक्योरमेंट पर्याप्त रूप से हो पाए। और इस बार भी जैसा आप कह रहे हैं 2,37,00,000 करोड़ रुपया उनको इसके जरिए दिया जाएगा और 1,000 से ज़्यादा मेट्रिक टन धान और गेहूं की जो है वो प्रोक्योरमेंट होगा। और मगर मेरा जो कहना है वो ये है कि हमें ये चीज़ें तो अब हो रही हैं, होती रही हैं, हमें नए सिरे से सोचना है अपने कृषि विकास के लिए। और हमें नए सिरे से इसलिए सोचना है क्योंकि अगर हमने इस पर 17% जो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस हैं वो हमारे कृषि क्षेत्र से आते हैं। हमें इसको कम करना अनिवार्य है। हमारे जो लागत बढ़ती जाती है हमारी केमिकल इनपुट्स की, उसको कम करना हमें अनिवार्य है। और वो तभी हो पाएगा जबकि हम प्राकृतिक खेती के बारे में और विस्तार से सोचें, उसका और विस्तार से उपयोग करें। और जैसा मैंने आपसे कहा कि अभी 30 लाख किसान 11 हमारे राज्यों में तो इसमें जुट ही चुके हैं। हमें इसको जो है वो हर किसान के घर तक पहुंचाना है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम होगा जो भारत को पूरे विश्व में एक अग्रगण्य देश बना लेगा। क्योंकि अब फ्रांस है, जर्मनी है, अभी जर्मन पार्लियामेंट ने एक लॉ पास किया है कि उनका सारा जो एड है वो एग्रीकल्चर, क्लाइमेट चेंज इन एग्रीकल्चर पर दिया जाएगा। तो बहुत सारे देश इसमें आगे बढ़ रहे हैं और मुझे बड़ी खुशी है ये देखकर कि हम लोग भी इस दिशा में आगे अग्रसर हैं। Indeed, the agriculture and allied sectors are very important, not only for the rural economy, but overall for Indian growth as well. Thank you so much, Mr. Rajiv Kumar, as well as Mr. A.K. Bhattacharya and Mr. Sachin as well, for sharing your views and comments on the union budget. We'll take a short break here, but on the other side, we'll continue our discussion on various aspects of the union budget with more experts. Stay tuned.